So, Dr. Gohar, Yes, we sir. have made this live on YouTube. Okay. So it's visible to those who want to watch live on YouTube, as well as it will be used as a future reference material for MBBS first year students. So those who want to refer this subject can refer. The students started joining the class, so without wasting our time, we will start the class. Those who were joining late, they will get the recorded one, and accordingly we'll start the class. So just, I'm requesting you give your brief Okay. introduction and start your class. Thank you. Okay. Good afternoon, students. Okay, myself, cardiovascular physiology. Okay, you can hear me? Okay. Yeah, you are audible and your slide is visible. You can continue. So, first of all, that we have prepared this material for the students who are enrolled in the first professional, and we have target to make prepare them for next. So most of the students have to prepare for MCQs and the questions that have been asked in the various examinations. So first of all, you will be introduced about some topics of cardiovascular system that we can say as high topics. These are the various currently, and there are some small topics that are not asked frequently. You can see here that the electrical properties of the heart and about the impulse, electrocardiogram, and cardiac cycle, cardiac output, and blood pressure, especially the blood pressure regulation. These are considered as high-yield topics that covers most of the questions in the professional examination as well as in the MCQs in your, you can say that we're going to very soon as next examination. Okay. Now, first of all, I will brief some important questions that we are going today. First of all, see, these are the topics, and some topics are marked as red. So we have divided this cardiovascular system in two, three components. And today we will try to discuss the topics about electrical properties, conduction, and the electrocardiogram. And later on the next one or in the next class, we will try to discuss the cardiac cycle, cardiac output, and blood pressure. Okay. So today we will see the questions related to the topics that we are going to cover today only. Like you can see that these are the important questions that comes in various examination in various parts of. You can see that the conduction of cardiac impulse through heart and why SI node is called to be pacemaker. Then there is question about rhythmical excitation of heart. Then again, you can see the one question that is called action potential of cardiac muscle, and one that the fourth one is short notes of origin and spread of cardiac excitation. And what are the pacemaker potentials? So there are two types of potential, action potential and pacemaker potential. And both the questions are asked very frequently in all of the exams. Then you can see again the short notes on pacemaker potential and about heart sounds. These are the various questions. Then again, second part, that is about the electrocardiogram. That is very important topic as per MBBS and PG both. And you can see that may be asked as a short notes, that may be a long question or essay type questions. And even it is covering very much questions about the practicals and MCQ. So you can see that there are questions on short notes on ECG, then briefly explain normal electrocardiogram. Then there is a one question that is usually somehow complicated and long question that asked about one law that is called Enthoven's law.
and then the Victorian analysis of normal ECG. Okay. And then about the significance of mean electrical axis. And again, you can see that besides this principle of ECG, there may be other question that only asks about normal duration, voltage, and significance of all the components of ECG, that is ECG waves, segments, and intervals. And sometimes the question is also asked about the practical part, that is actually the leads of ECG, and that is asked in the theory. And in applied part, you will see that the question is asked about arrhythmias and then heart block, and something that is very important and basic that MBBS students should know, that the changes in myocardial infarction. Now we are moving to the class of cardiovascular system, and this is the basics class, the first class. So I suppose that you should know about the functional anatomy or the basic things about the heart, that you know that heart is a pump, that organ is a muscular double pump. Why it is double pump? Because there are two parts. One is the component of atria, two atria are there, and similarly there are two ventricles in lower side, and these two are pumping independently. And you know that there are four chambers, but when you talk about the pumping activity, then it is considered that there are two pumps in upper side, atrial pump, and one side is the ventricular pump. Now, that is a very basic thing that tells about where the heart is situated, because either anatomy or physiology, there are various aspects where you should remember that what is the borderline of this heart. Either the lateral surface is where, right margin is where, left margin is where, and where is the base of heart, and where is the sternum is passing through the heart, and where is the apex. You will study very well in the anatomical portion of this situation of heart and related to the border and base and apical structure about the heart. Okay. Then one thing that you should know about the heart valves. Again, it will be very much in detail dealing in the anatomy. You will be dealt in very detail in anatomy, but sometimes question is asked about short notes on the heart valves alongside with the question asked in the physiology about heart sounds. So you have to know that there are two types of valves. Okay. And the function of valve is to ensure unidirectional blood flow through the heart and from heart to the blood vessels. The flow of blood should be unidirectional, and that is opening and closing passively. And that passively is due to the pressure gradient from that is present on the both side of the valve. So that is the pressure, or you can say the force, either force created inside the chamber of the heart or force produced in the blood vessels due to the blood pressure. And that will create the cause why this atrioventricular valve or semilunar valve is opening and closing. As the name suggests, AV valve. Okay, that AV valve is the valve that is situated between atria and ventricles. Very simple. You have to remember these atria and ventricular valves. AV valves is the valve that's present between atria and ventricles. And similarly, another type of valve is present that is called semilunar. Why it is semilunar? Because the shape of that valve is half moon. Okay. Then both the types of valves, either AV valve or semilunar valve, are two in numbers. You can say that there are two AV valves and two semilunar valves. In total, there are four heart valves. Okay. So what are these four valves? Just memorize one: mitral valve, then tricuspid valve. Okay. That is the type of atrioventricular valve or AV valve. You can see that the mitral valve is the valve that is present between left atrium and
left ventricle. Okay. And tricuspid valve is situated in the right side between the atria and ventricle. Then similarly, when you talk about the semilunar, that semilunar valve is present in the blood vessels. And the blood vessels, as per the name of blood vessels, the valve name is named. Now, after the name of aorta, the valve present inside the aorta is called aortic valve. That is that is controlling the blood flow from left ventricle to aorta. Similarly, the right ventricle is also connected to pulmonary trunk, and that is through pulmonary valve, or sometimes it's also called pulmonic valve. Now, the questions that is simply related to the heart valves and asked in the physiology is about heart sounds. Okay. In normal way, we will define that there are two normal heart sound. First heart sound and second heart sound. First heart sound is simply called as produced due to the closure of atrioventricular valve. Okay. And second heart sound is produced by closure of semilunar valve. And because there are two components, there are two valves, mitral and tricuspid in the AV valve. So you can write it as component M and T, and is a part of first sound. So that will be called as the sound as M1T1. So first heart sound has two components, M1 and T1. Similarly, second heart sound has two components, aortic and pulmonary, and these are called A2, P2. Then when you will be asked about the difference, then you have to remember that difference are there either at the positioning or the timing of the heart sound. Okay. The first thing, that first heart sound is present in or just before the systole. It is called that first heart sound is present at the starting of systole, and second heart sound is present at the starting of diastole. You will come over in about the systole and diastole in the next class about cardiac cycling. Okay, but I think you all know very much or something about systole, diastole, basic things. So just remember that systole starts with first sound and diastole starts with second sound. You can see in the picture, and now you can see that the time gap, time gap between S1, S2, and again time gap between S2 and S1. As you know, the length of diastole is longer, so that time gap between S2, S1 is more than S1 and S2. Okay. Then the physical difference is that first heart sound is somehow louder than the second heart sound and somehow prolonged also. Okay, so you have to tell about the first heart sound that it is prolonged and louder, but the quality is low pitch. Okay, in comparison to the second heart sound, which has high pitch sound. Then when you are examining or when you are hearing with a stethoscope, then the term used that is very much similar to the sound you are hearing. So in that case, you tell that first heart sound is love and second heart sound is dub. So that is love, dub, love, dub, love, dub. Okay, that tells about the first heart sound and second heart sound, and various qualities that can be differentiated by coincidence or a timing with carotid pulse. You must remember that first heart sound is a sound that coincides with the carotid pulse appearance. And just after the carotid pulse, the sound that is coming is second heart sound. Okay, students. Then now advancing to some other type of sounds. Basically, their normal sounds are first and second sound, but sometimes in advanced cases or some special physiological condition and some pathological conditions also, there may be third sound, and depending on the positioning of the third sound or fourth sound, it is called triple rhythm. Okay. Now
where is the third and fourth sound that will appear in the next slide. Just you remember that when first and second sound is also having some other type of sound, there is a rhythm of more than two sounds, then that is be called gallop rhythm, and that is called triple sounds, okay, or triple rhythm. And you should remember that this third and fourth third sound is always have low frequency, so that cannot be heard or less moderately heard with the diaphragm. It is better to hear with the bell side of the stethoscope. And for making these sounds more visible, or you can say you can hear easily by moving the subject or moving the patient to the lateral side, left lateral position. In you can see that in the left lateral position, these other sounds which are third and fourth sound are appearing more clearly. Now, just brief about the third and hard sound. You have to remember that when you have been asked about the question of hard sound in the MBBS level, usually you have to deal about first and second sound in detail and just introduce about third and fourth sound. Third and fourth sound is not considered as much important for first year students. Okay, just you have to tell that these are the third sound. Third, why it is called third? Because it is just appearing after second. So it is third hard sound, and fourth one is appearing just before first. Okay, you can remember first, second, third, and fourth. Now, about specialization, you can say that third hard sound is appearing in early diastole, and fourth hard sound is appearing in the late diastole. And when you will be dealt in the cardiac cycle about the filling, you will be knowing that S3 is cause. What is the cause? That is the first rapid filling phase and last rapid filling phase. Okay. Then coming to the next component, that is a cardiac muscle and their properties. Sometimes the cardiac muscle is asked in the nerve muscle physiology also, but as it is a part of cardiovascular and very much important, so in detail it is discussed in the cardiovascular physiology. As you know, cardiac muscle is present in all parts of the heart, and there are three types of muscles: atrial muscles, ventricular muscles, and there are some specialized muscles that are, you can say, present in the various nodes, SA node, AV node, and the conducting fibers. Okay, all are the cardiac muscle, but there are slight difference between the electrical and mechanical properties and some structural difference also between these muscles. What about the cardiac muscle specialty? That you should know that it is the striated muscles, and it is involuntary. It is supplied by the nervous system, that is the autonomic nervous system. It is involuntary muscles, and it is having very long cardiac cells. So cardiac muscle cells are very long. You can say 100 micrometer long and having branching pattern also. You can see the branching pattern, and there are, if you find two cells, then in between two cells there are connections that are actually some gap junctions and some desmosums. These are the electrical connections found between two cardiac muscles. Due to this electrical connectivity that you are seeing at gap junction and desmosome, these are present at one side. That site is called intercalated disc. The site where two cells are connecting to each other is called intercalated disc, and that intercalated disc is actually can transmit the electrical signals. And due to this transmission of electrical signal, when one cell is excited, that will send electrical signal to the next cell and subsequently to the third cell, fourth cell, and so on. And due to these connections, we say that heart functions as syncytium. Okay, and there are two syncytium. As earlier slide I said, there are two pumps: atrial pump and ventricular pump. So
This is simply called, there are two separate syncytium present in the heart. One is called atrial syncytium and another is ventricular syncytium. Just enumerating the properties, these are various properties of cardiac muscles, and any of the property can be asked or any of the property can be discussed in the MCQs or in the short answer questions, long answer questions about the cardiac muscle or the properties. Like electrical properties are excitability, rhythmicity or automaticity, then conductivity, and mechanical is simply contractility. You have to remember this very clearly and to try to understand these all properties, especially excitability and automaticity. There should be no confusion. We will discuss one by one. I will try to make easy for you. Now, before that, first thing about the electrical things that is present inside the heart. As I said, there are various types of muscles. Muscles present in the atrium, muscles present in the ventricles, then the fibers that are present in the SA node, AV node, conducting fibers. These are the various different type of muscles. And these all type of cardiac cells are differing slightly in their electrical properties and their mechanical properties. And that is based actually on the thing that you can say the action potential. Now, you have read about the action potential that is in the nerves and skeletal muscle. Now you have to very much clear that the action potential present in the heart is different from the action potential that was of nerve and electrical of skeletal muscle. In some pages that is quite different. And beside that, the all type of action potential that is present in the heart, you can see here, this is heart, and you will see that action potential in the heart are of various types. The various types of cells are having various type of action potential, and that difference in the action potential is actually the basis or the principle for the function of different components like the atria, ventricle, SA node, AV node, conduction tissue, the various types of different functions and various different properties. The action potential that we are dealing is, is produced automatically in the various cells, and that makes property that is called automaticity. And conduction is movement of that action potential from the SNA towards the other further cells. And the action potential that is present in all parts of the cells that is automatically produced is called automaticity. And then that is another thing that is excitability. Okay. So for excitability and automaticity, that we have two terms. So these two terms are based on the two types of action potential. Okay. So first thing, don't go in the things where are the properties. Just try to understand that there are two types of action potential in the heart. One is called slow action potential and one is called fast action potential. Okay. The slow action potential is the potential that is present in the SA node and AV node. And fast action potential are the potential that are present in the atria and ventricles. Okay. And now these two types of the cells differentiate the two types of property CT. The action potential that is slow, that is present in the SA and AV node, is producing automaticity. And the action potential that is the fast one present in the working cell is causing the contractility and other type of properties. On that we are saying that cardiac muscle is excitable. Okay. The automaticity will be discussed in later property. The first that is I am saying excitability. That excitability is the property of all type of cardiac cells.
that are present in the atria ventricles. First, you have to remember that and resting membrane potential. Now, the first thing you have to remember that the resting membrane potential of any cardiac cell is different from the skeletal and nerve. In a skeletal and nerve, that was the minus 70 millivolt, but here that is minus 90 millivolt. The first thing that you must remember that is the minus 90 millivolt. And now from this RMP of action potential, you will see the special pattern of action potential having various phases: phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. Okay. Now, when you compare with the previous one of nerve or skeletal muscle is the phase 2. Now, phase 0 is very simply is the depolarization, and phase 1, phase 2, phase 3. These all are having repolarization, and similarly depolarization was in the nerve and skeletal, but here depolarization, after depolarization, the repolarization is not a constant flow. Now you can see that some are slow. The initial one is the fast one, then middle one is the slow, then the last one is again rapid. So you can divide repolarization into three phases: fast, slow, fast. Initial fast, and that is the somehow slower for so it is called brief. And middle is this slow one that is called plateau phase. And that is a very special property of this fast action potential of this cardiac muscle. When you will be asked about the normal one, simple normal one, when it is asked about the what is the action potential of cardiac muscle, that means this. It is about whole cardiac muscle. That is the fast one. And you have to tell about the plateaus. The initial one depolarization is having the basis of same basis as per the skeletal and nerve. It is due to the sodium channel opening. Sodium channel is opening and increasing the permeability. So that is causing the positivity to the cell. You have to remember for depolarization, phase 0, what is responsible is the voltage gated fast sodium channel. Then phase 2, repolarization, phase 1, phase 2, phase 3. That is the repolarization. As I said, initial one, then plateau phase, and the last part. Here you will see that what is happening. Now the sodium channel start closing and potassium channel start opening. In the first phase, sodium channel now closes and potassium channel opens to cause potassium efflux. That will cause the earlier part of depolarization. But in the second phase, actually, what is adding besides that sodium potassium channel, now there is one another type of channel, that is calcium channel. Now calcium channel open, and that will cause somehow slower rate of repolarization. Okay, and this is causing the plateau phase. Calcium channel and fast potassium channel. Then in the last one phase, again potassium channel is opening, that is slow potassium channel, calcium channel, and here are the slow potassium channels. तीन अलग अलग तरह के channels हैं जो तीनों phases में continuously open होंगे. Okay.
Now the fourth one, as very much clear, you can say the fourth one is simply the code. Then coming to the second property, that is the rhythmicity, automaticity. Now, as the term is suggesting, automaticity is simply the thing that is causing the automatic contraction or automatic function of heart, and the contraction of that action potential as myogenic in nature. Automaticity is actually present in the muscle itself, that is the cardiac muscle itself, and the part of cardiac muscle that is causing is present in the atria near the node. And beside this SA node, all the type of nodal tissues have the property of automaticity. And you know very much that this is the SA node, AV node, Purkinje fibers, and ventricular muscles that are at very low. So you can simply say that automaticity property is again present in all parts of the cells. Like the first one, excitability is present in the all part of the heart again, but that depends on the which part have the stronger big size of action potentials. Now here you should remember that rhythmicity, automaticity is present in main part is the nodal tissues, but the other part ventricular muscles also have very less automaticity property. What is deciding the automaticity of whole heart is the part which has the highest rhythm. जिस पार्ट में सबसे दिख रहा है आपको, जैसे नोड है, एवी नोड है, पुरकिंजी फाइबर, वेंट्रिकुलर मसल्स, इन सब में सबके हमें रेट्स देखने हैं, किसका रिदम क्या है, कौन ऑटोमेटिक सेल किस रेट से फायर करता है, फायर मंथ की कितने एक्शन पोटेंशियल पर मिनट वो प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल produced per minute, that decides the automaticity of part. For SA node, that is the 90-110. सबसे ज्यादा SA नोड का है, सबसे ज्यादा रेट होगा उसको हम पेस मेकर बोलेंगे. You have to remember very clearly that the pacemaker is simply called the nodal tissues that is firing at highest rhythm. Now you have to know that SA node is having 90 to 110 per minute. And then is the sinus rhythm is given to the SA node, and nodal rhythm term is given for AV node. And if there is any problem in this SA node and AV node, then there is beating of the rhythm, that is the rhythm present very near to the AV node or very in between the AV node and Purkinje fiber, that you that the idioventricular rhythm. Then get ectopic. Ectopic pacemakers. Ectopic pacemaker का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो नॉर्मल पेसमेकर्स हैं जितने भी हैं, इन सबको छोड़ के जिस एरिया में नोडल टिश्यू नहीं होता है वहां पे कोई नोडल टिश्यू प्रेजेंट हो जाए, that is abnormal pacemaker, and you will see that is the pacemaker. Now coming to the principle of this autorhythmicity, how this autorhythmicity is produced, why this is different from the excitability. Now that defines the another type of action potential. तो ये आपको याद रखना है. अब एक एक्शन पोटेंशियल दूसरे टाइप का भी, okay, that is called slow action potential. Slow action potential is actually a potential that is responsible for this auto important term, that is another name of this is called pacemaker potential. जो pacemaker का जो potential है, that is causing the automatic firing of this nodal rate of
या आप कह सकते हो कि इसी नोड के लिए, एबी नोड के लिए जो पोटेंशियल potential है, ये पहले हार्ट के दूसरे having very less phases. Now you can see that it is having a rapid depolarization. Again, very rapid depolarization. Now that rapid depolarization is phase 0. वहां भी पहले phase 0 था, यहाँ भी phase 0 है. डिफरेंट क्या है, यहाँ phase 0 में ही सोडियम के बदले कैल्शियम चैनल इन्वॉल्व है. Channel is quite different, but it is due to the calcium channels. Okay. Beside that, sodium channel is also present, but it is sodium channel is having very less role. Then second phase, the plateau phase जो होना चाहिए, वो plateau phase यहाँ पे absent. Okay. रिपोलराइजेशन में जो पहले फास्ट था, फिर स्लो हो रहा था, फिर फास्ट हो रहा था, इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं हो रही. यू विल सी दैट देयर इज ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट स्लोप रिपोलराइजेशन. नाउ यू कैन से दैट फेज 1 इज एब्सेंट, फेज 2 इज एब्सेंट, फेज 3 एब्सेंट. हम यहाँ पे 1 2 3 को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, बट सिंपली वी आर सेइंग दैट देयर इज वन रिपोलराइजेशन, एंड यू कैन से हियर दैट इज द फेज 3. हम वन और बता दीजिए, किसी एक फेज को ले लिया जो कि here beside that calcium channel, potassium channel is also opening. Then very peculiar thing in this pacemaker potential that is actually especially asked about this topic is again that is called called pacemaker potential. यहाँ तक क्या था, ये हम depolarization हो रहा है. That depolarization is up to -40. You have to remember the value also. That repolarization is up to -40. -40 तक हम repolarization बोलेंगे, because that -40 was the place where the firing starts. तो -40 के ऊपर फायरिंग हुआ था और -40 तक ये वापस आ गया. ये हमारा मेन एक्शन पोटेंशियल का पार्ट है. -40 पे ये आके रुकता नहीं है. What is happening here? That it will go down -40, and actually that can go to the -60, -40 to -60. And the peculiar thing जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए वो ये है कि -60, -40 से -60 तक ये फिक्स है. Constant नहीं है, but you can say -50, sometimes it may be -55, sometimes -60. तो ये जो -40 से -60 तक की वैल्यू है, ये सारे सेल्स के लिए, इवन की एक सेल के लिए भी कांस्टेंट नहीं. ऑलवेज इट इज नॉट गोइंग -60 टू ऑल टाइम्स. सो इट इज कॉल्ड अनस्टेबल पोटेंशियल. इसके वजह से इसको हम अनस्टेबल पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम प्री पोटेंशियल भी. Okay. So various names, either prepotential, unstable potential, these all are the same thing, and questions are usually asked as pacemaker potential. Okay. And what is the cause of this? That is very important. It is commonly asked why this is unstable, because there is one channel that is very, you can say, inward leaking sodium channel. It is actually the channel that can transmit both the ions, that can transmit the sodium also, and then can transmit the calcium also. Okay, that is actually inward leaking channels, and you can say that some channels are always open. कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं, लेकिन ये ओपनिंग का रेंज जो है ज्यादा कम हो सकता है. कुछ चैनल्स स्लाइटली ओपन होंगे, closed होंगे. So it is called leaky channels that are transmitting sodium and calcium, inward leaking, and due to this reason that will continue, and that repolarization will continue up to the
more or more lower value up that can go to the minus 55 and minus 60. एंड दीज आर वैसे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लीकी करंट या फनी करंट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि फनी करंट और लीकी करंट का मतलब क्या है। एक ऐसा चैनल है जो सोडियम और कैल्शियम दोनों को ट्रांसमिट करता है एंड दैट आर ऑलवेज ओपन लीकिंग सम आयनिक सब्सटेंसेस। देन the question is asked especially in MCQ sometime, or if it is asked about the pacemaker, you can add what is the effect of neural stimulation or some drugs on the rate of heart. Okay, as you know that it is supplied by autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic, and the parasympathetic stimulation is vagal nerve. And you have to remember, you have to know that vagal stimulation causes decrease in heart rate. So when weak to moderate stimulation, it causes stimulation, the heart may stop also. Okay, इसको याद रखना है कि वैगल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है। वैगस जब हम एक्टिवेट करेंगे तो हार्ट रेट हमारा कम हो जाएगा या रुक भी सकता है। नाउ यू कैन शो द सेम इफेक्ट ऑन पेसमेकर पोटेंशियल। इसमें क्या दिख रहा है कि पेसमेकर पोटेंशियल में जो हमारा रिपोलराइजेशन फेज था, इसका स्लोप जो है क्या हो रहा है, स्पेशली जो ये जो पार्ट है, यू कैन सी द प्री पोटेंशियल पार्ट तो गया। ठीक है, प्रोलॉन्ग होने का मतलब है कि एक पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया। यू कैन से द रेट इज डिक्रीज्ड। ओके, एंड दैट मे कॉज it is very high, then it will be stop, and when you will stop the signal, हमने vagal stimulation को हटा दिया, vagal stimulation को हटा दिया तो फिर से धीरे धीरे ये आइडियो वेंट्रिकुलर रिदम आएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होगा 15 to 40 बीट्स और फिर ये बाद में नॉर्मल लेवल पे जाएगा। तो याद करना है कि जब भी वैगल स्टिमुलेट करेंगे इसको हम बोलते हैं वैगल एस्केप। वैगस का स्टिमुलेशन खत्म होने के प्रोसीजर को दैट इज कॉल्ड वैगल एस्केप फिनोमेना, एंड वैगल एस्केप फिनोमेना स्टार्ट्स विद अ वेरी लो रेट 50 to 40 बीट्स। Similar thing will happen, the opposite things will occur that can increase the you can say the slope is increasing, and that will cause the much higher rate and much higher discharge of SA node, and that will also cause the increase in the contraction of मस्कुलेचर। यानी कि इसमें सब कुछ सिंपैथेटिक में बढ़ जाएगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा, कंडक्शन भी फास्ट हो जाएगा और इवन कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है ये भी इंक्रीज कर जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स स्पेशली अबाउट द इफेक्ट ऑन SA नोड। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोड्यूस हुआ था एक्शन पोटेंशियल, हमने कहा कि ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू ऑटोरिदमिसिटी। नाउ दैट प्रोड्यूस्ड, और आपको मालूम है कि वो धीरे धीरे वो पूरे हार्ट में ट्रांसमिट करेगा। वंस इनिशिएटेड इन द ऐसे नोड it will travel to the all parts of the heart, and that is the property of heart. No one can stop it. So it is the inbuilt property that is called conductivity, and again that conductivity depends on the speed of conduction, speed of impulse in the various parts of the heart. दूसरी चीज आपको मालूम नहीं, ये कंडक्शन जो होता है वन वे कंडक्शन होता है। कंडक्शन आप नर्व में अपने पढ़ा होगा, वन वे पॉसिबल है, टू वे पॉसिबल है, बट स्पेशली इन द हार्ट दिस कंडक्शन इज वन वे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपोजिट साइड में किसी वजह से फ्लो होने लगे। वेरी रैपिड ट्रांसमिशन एंड इट इज one way conduction through AV bundle. Okay, now see this very simple route. What is the route of this conducting system? It is starting from the SA node, then going to the AV node. You can see here SA to AV node, and then it will go to the bundle of phase.
and from bundle office that will be going to bundle branches, and from bundle branches it is going to the Purkinje fiber. This is the conducting system of the heart. But in this conduction, the rate is not constant. ए नोड से स्टार्ट हुआ, एबी नोड तक जाएगा, उसके बाद एक फिक्स पैटर्न है, इस पैटर्न पे ये मूव करेगा फ्रॉम एस ए नोड टू द other parts of the heart. It is one way, but the important thing is that it is not traveling at constant rate. ये rate of conduction हर part में equal नहीं है. अलग अलग टाइप के जो फाइबर्स दिखाए जा रहे हैं, इसमें इनकी स्पीड अलग अलग है. What is the speed here? The speed is here in, कहाँ पे है? सबसे कम कहाँ पे दिख रहा है? एट्रियल मसल में 0.4 है, एट्रियल पाथवे में 1, EV node having 0.05, bundle of phase again 1, Purkinje system 4.5 and ventricular muscle 0.52. Now the point जो हमने यहाँ से आपको क्या रिजल्ट निकला? You will find that minimum velocity of propagation of cardiac impulse is present in the AV node. इसे नोड के बाद सबसे पहले जो है एवी नोड में सबसे कम है, ऐसे नोड से एवी नोड जाने में सबसे कम कंडक्शन रेट है. उसके बाद सबसे ज्यादा जो है पुरकिंजे सिस्टम, हाईएस्ट एंड लोएस्ट आपको याद रखना है. ऐसे नोड और एवी नोड में नोडल टिश्यू 0.5 है, देन पुरकिंजे सिस्टम में रेट. Now one important thing that most of the students don't remember, but MCQ question is asked on these things. ये क्या है? एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रेवल कैसे होता है? जब भी आप पिक्चर ड्रॉ करते हो, आप ड्रॉ करते हो कि ये एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया. एट्रिया से वेंट्रिकल में सिग्नल कैसे जाता है? इसका भी कुछ पाथवे होना चाहिए. That pathway is not clearly shown in some books, so you must remember the pathway that is going through internodal pathway. इसी नोड से एवी नोड के बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, that you are seeing the conduction impulse transmission. That conduction impulse transmission is through internodal pathway, and there are 3 internodal pathway. One is called anterior, middle, then posterior, and there are various names given. Anterior internodal is tract of Bachmann, and middle internodal is called tract of Wenkebach, and posterior internodal is called tract of Thorel. ये आपको नाम बहुत अच्छे से याद करना है. Anterior क्या है, middle क्या है, posterior क्या है, and don't forget that there is internodal pathway. ऐसे नोड से AV नोड जाने के लिए क्या पाथवे है? There are some tracts, fiber tracts that are divided into 3 parts. All 3 tracts are carrying these signals from SA node to the AV node. Then, as I said, the Purkinje system is very high speed of this conduction, one-way conduction, and it is having very high speed. Now, what is the speed? अगर speed की बात करते हैं, तो सिंपल आपको दिख रहा है कि सिर्फ 0.03 सेकेंड और 0.06 सेकेंड के बीच में ये पूरे के पूरे हार्ट में ट्रांसमिट हो जाता है. उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये बंडल ब्रांच में 0.03 सेकेंड में आता है, और 0.03 सेकेंड फर्दर यानी कि 0.06 सेकेंड तक पूरे के पूरा ट्रांसमिशन हमारे हार्ट के सारे पार्ट में फैल जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पीड के साथ साथ कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि दोनों तरफ के वेंट्रिकुलर मसल्स पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं. पूरी तरह से ऐसा नहीं है ट्रांसमिशन में कहीं भी डिफरेंस की राइट वाला थोड़ा पहले हो जाए, लेफ्ट बाद में हो जाए. देयर इज वेरी मच सिंक्रोनाइज, एंड दैट सिंक्रोनाइजेशन नीड्स द वेरी फास्ट मूवमेंट. स्लो हो जाएगा उसमें फिर सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा. सो दैट इज द वेरी रैपिड ट्रांसमिशन इन दिस पुरकिंजे सिस्टम. एंड उसका रीजन क्या है? हमने बताया कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है? गैप जंक्शन से. जो नेक्सस पे जो गैप जंक्शंस बन रहे हैं, that gap junctions are responsible for the electrical transmission. So you have to remember that
the number of gap junctions are very much higher in this Purkinje system. Then one very important thing is there that when you are telling about the time कि हमारा 0.03 सेकेंड यहाँ आया, फिर हमारा 0.03 सेकेंड के बाद 0.16 सेकेंड ये हमारा ट्रेवलिंग कर रहा है। इसमें यहाँ पे एक पार्ट ऐसा है कि ऐसे नोड से एवी नोड पे ट्रांसमिशन होने के बाद एवी नोड से आगे की पार्ट में जिसको हम कहते हैं बंडल ब्रांच में जा रहा है, वहां पे थोड़ा टाइम लेता है। वहां पे आप कह सकते हो कि एक पॉज है, बहुत ही छोटा सा एक पॉज है। जो हमारा सिग्नल आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो फ्लो कर रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड में एक जगह ऐसा है जहां पे थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हो कि रुक जाता है। दैट इज कॉल्ड एवी नोडल डिले। एवी नोड है, एवी नोड में ट्रेवलिंग हमने बता दिया है कि स्लोएस्ट भी है, and beside that slowest there you can say that very much stoppage, and that is you can actually say that it is delayed in transmitting from this SA node to other parts of heart। यहाँ पे EV node का काम क्या है, ये डिले करता है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन है वहां पे सिग्नल थोड़ी देर के लिए डिलेड हो जाती है, और उस डिलेड का एक्चुअली एक फिजियोलॉजिकल एडवांटेज है। व्हाट इज द डिले टाइम? You have to remember the delay time is 0.10 second, 0.1 second, 0.1 second sometimes written or sometimes 0.12 और 0.15। ये डिपेंड करता है आपके कितने क्या आंसर दिया हुआ आपके बुक। You must remember 0.1 to 0.15 is the delay present in the AV node। इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो एट्रियल फीलिंग होती है ब्लड की और वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, इसके बीच में प्रॉपर गैप होता है। जब तक पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर जाए तब तक वो आगे की फीलिंग नहीं हो सकती है। तो ये पूरा टाइम देता है हमारे वेंट्रिकल को रिलैक्स होने के लिए, और उसके बाद जब तक एट्रिया खाली हो रहा है और वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो उसके बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होना चाहिए। एकदम से वो रिलैक्सेशन पूरा प्रॉपर नहीं होता है, तो रिलैक्सेशन फुली हो जाए उसके बाद वो फीलिंग स्टार्ट हो, यानी कि डैश एट्रियल सिस्टोल हो गया है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में है। बट आप आगे पढ़ोगे कि अर्ली डायस्टोल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। तो अर्ली डायस्टोल की उस पार्ट को जिसको हम प्रोटोडायस्टोल कहते हैं, दैट प्रोटोडायस्टोल इज वेरी मच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द दिस एवी नोडल डिस्प्ले। ये टाइमिंग हमें पूरी तरह से जब तक एट्रिया डिपोलराइज हो रहा है और ये रिलैक्स कर रहा है, इसके बीच में एक टाइमिंग होना चाहिए, यानी कि वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन से पहले एट्रियल डिपोलाइजेशन कंप्लीट हो जाए और फिलिंग से पहले एट्रिया का पूरा जो खाली हो चुका है उसके बीच में प्रॉपर टाइम हो। दैट इज नोन इज प्रोटोडायस्टोल इन द कार्डिक साइकिल, एंड दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एवी नोडल डिले। Then coming to the mechanical properties, actually mechanical properties is not frequently asked in theory, but sometimes the MCQ can be asked. Very simple, you know that the basic function of the heart is to pump blood. So that is the first mechanical property, that is the contractility. Then there are two properties that are very special about the heart, that is heart is following all or none law, and that all or none law is actually applied on the, जो हमने बताया था कि सेंसाइटियम फॉर्म हो रहा है, एट्रियल सेंसाइटियम या वेंट्रिकुलर सेंसाइटियम। तो ये उसमें कहा जाता है कि ऑल और नन लॉ का मतलब ये है, ये जो हार्ट है जो कार्डियक मसल से या तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी करेगा मैक्सिमल करेगा या फिर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कम और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके उस पे प्रॉपर्टी पे ये बिलीव नहीं करता है। द ऑल एंड नन लॉ इज अप्लाइड टू द हार्ट and the contraction is constant, and that is the highest, always contracts maximally, either contracts maximally or will not contract, and that is applied on the one unit functional size density। तीसरी चीज होती है that is the cardiac muscle cannot be titannized, cardiac muscle cannot be fatigued। हार्ट हमारे बॉडी में है, आप जान रहे हो, कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, ठीक है। हमारे स्केलेटल मसल में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ जाओगे, बहुत ज्यादा दूर तक दौड़ जाओगे, तो उसमें क्या होता है, फटीग आ जाता है, ठीक है।
या फिर हम बहुत ज्यादा बार बार उसको हम स्टिमुलेट करते हैं तो उसमें टिटेनाइज हो जाता है। अगर लेकिन आपको हार्ट में क्या दिख रहा है, कार्डियक मसल में, कि हमारा कार्डियक मसल जो है, हार्ट जो है, जब से बर्थ हुआ है तब से लेके लास्ट लाइफ के लास्ट फेज तक, लास्ट टाइम तक आपका हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। तो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है विदाउट बीइंग टिटेनाइज और विदाउट फटीग। ये किसकी प्रॉपर्टी है कि ये टिटेनाइज नहीं हो सकता है और फटीग नहीं होता है। एंड दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क्ड, व्हाई कैन कार्डियक मसल इज कैन नॉट बी टिटेनाइज। तो ये जो प्रॉपर्टी बताई गई थी सबसे पहले, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमने बताया था कि एक प्लेट्यू फेज होता है। तो प्लेट्यू फेज में ही एक पीरियड होता है जो आपने पढ़ा होगा नर्व मसल्स में, दैट इज सिंपली रिपोलराइजेशन में को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। Refractory period is present in the repolarization phase, and in case of cardiac muscle that is actually occurring at the plateau phase। यानी कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है बहुत ज्यादा है और उस फेज में हमारा जो है, जो प्लेट्यू फेज है उसी में रिफ्रैक्टरी पीरियड आ रहा है। इतना लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड है, अगर एक सिग्नल के बाद दूसरा सिग्नल आता है तो वो टाइम गैप इतना है कि पहले का एक्साइटेबिलिटी पूरी तरह से लॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक अभी एक्साइटेबिलिटी है उसी टाइम में दूसरा एक्साइटेबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। दोनों एक्साइटेबिलिटी बहुत हद तक डिफरेंशिएटेड होते हैं। एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के बीच में एक प्रॉपर गैप होता है, इतना गैप होता है कि वो टिटेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एंड दैट इज प्रेजेंट इन द, अगर मैकेनिकली उसको आप करस्पॉन्ड करोगे तो ये मालूम रहेगा कि दैट इज प्रेजेंट इन द एंड ऑफ सिस्टोल। तो एंड ऑफ सिस्टोल एंड अर्ली पार्ट ऑफ डायस्टोल इज एक्चुअली इन द correspondence with that long plateau period और लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, और उसकी वजह से एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है रिलैक्स करने के लिए और वो टिटेनाइज नहीं हो सकता है। This is one law that tells about the force of contraction. What will be the initial force of contraction, और किसी हार्ट में किसी वक्त जो है कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसको कहते हैं स्टार्लिंग लॉ। ये फिर से आएगा कार्डिक साइकिल में, कार्डिक आउटपुट में। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर, या उसको हम दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग ये कहते हैं कितनी स्ट्रेचिंग पहले से हमारा कार्डिक मसल फाइबर जो है कितना स्ट्रेच्ड है, और स्ट्रेचिंग का कॉज क्या है, उसमें कितना ब्लड फिल है। यानी कि जो हमारा जितना ज्यादा ब्लड फिल होगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट विल डिटरमाइन द कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। सो दैट इज सिंपली कॉल्ड force of contraction is directly proportional to the initial length of the cardiac muscle. That tells about the length tension relationship, and that is called Starling law. One more thing is there, that is applied on the individual fibers, not on the whole heart. It is the experimental thing that tells that depends on the stimulus. When you are giving the successive maximal stimuli, there will be beneficial effect। ये आपको हार्ट में, होल हार्ट में नहीं दिख सकता है। ये हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल फाइबर्स में करते हैं, उसमें ये शो किया जाता है कि ये किस तरह से बेनिफिशियल effect produce होगा and what may be the cause. So that is the simply basic thing that explains that calcium is involved in the contraction. Contraction के प्रोसीजर को, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को, के प्रिंसिपल को समझाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है। अगर फाइबर को अलग किया जाए, कॉन्ट्रैक्शन कराया जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, दैट इज, आपको मालूम है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जो होती है दैट रिक्वायर्स कैल्शियम। तो कैल्शियम ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो जो कैल्शियम है, अगर पहले कॉन्ट्रैक्शन का कैल्शियम कुछ बचा रह जाता है, जिसकी वजह से जब सेकेंड स्टिमुलस देते हैं तो सेकेंड टाइम कैल्शियम प्रोड्यूस और एंटरिंग इन द मसल एरिया, एंड द कैल्शियम प्रेजेंट और द कैल्शियम दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ड्यू टू द प्रीवियस स्टिमुलेशन, दोनों ऐड कर जाएंगे और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होगा पहले कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रांग होगा। तो रीजन क्या है इसका, एक तो कैल्शियम जो पहले से प्रेजेंट है, दूसरा जो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो इसका इनर्शिया कम हो गया। तीसरी चीज यह है कि जब वंस
contraction started, there is increase in temperature. These all factors causes easiness in the second contraction. तो ये हम मसल्स पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए करते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन के स्टेप में क्या क्या बेनिफिशियल and especially understanding and involvement of this calcium. Then one more thing is there, that is again the important property that can be present in the isolated heart, that can be present inside your body, and that is called extrasystole. अभी हमने बताया था एक एक्टोपिक बीट, जो बीटिंग हो रही थी, जो हमारा एसी नोड एवी नोड था नॉर्मल था, उसके अलावा हार्ट में कहीं पे नोडल टिश्यू प्रेजेंट हो जाए तो उस चीज को कहते हैं कि एक्टोपिक नोडल टिश्यू। सपोज यहाँ पे हमने मान लिया कि या तो कोई एक्टोपिक नोडल टिश्यू है जो एसी नोड के अलावा भी एक सिग्नल सेंड करता है, तो जिस प्लेस पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है या जहाँ पे एसी नोड का सिग्नल पहुंचा है, उसके साथ साथ एक दूसरा आ रहा है, दोनों सिग्नल एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन या एक्चुअल सिग्नल जो आना चाहिए वो उससे स्ट्रॉन्गर हो सकता है। ओके, तो इस चीज को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सिस्टोल। ठीक है, या हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि पहला अभी खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही दूसरा आ जाए। एक्चुअली जब दूसरा आना चाहिए, जो टाइमिंग गैप एक्चुअल है, उस टाइमिंग से सेकेंड का एक्चुअल अपीयरेंस से पहले एक सेकेंड वेव आ गया, तो ये सेकेंड वेव ऐसे नोड से नहीं आ रहा है, कहीं और से एक ऐसे नोडल सिस्टोल के अलावा एक एक्स्ट्रा सिस्टोल प्रोड्यूस हो गया, एंड this extra systole is produced, but the thing is seen that when this extra systole is present, then always after extra systole there is a pause, compensatory pause. क्या होगा, ये के लिए एक्स्ट्रा बीट हुआ है, हार्ट अभी एक्स्ट्रा बीट उसको मिल गया है, तो नॉर्मल बीट को वो इग्नोर कर दे थोड़ी देर के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड compensatory pause. So this is one property of heart. If heart is getting one extra systole, then for some time, just next to the extra systole, that will ignore the original wave, and that will be stoppage for very small, that is called compensatory. That may be found in some case of arrhythmias, some case of flutters, and similar thing that is opposite of this, that is called beat loss. जैसे एक्स्ट्रा सिस्टोल आ रहा है, उसी तरह से इसका अपोजिट हो सकता है कि समटाइम्स नॉर्मल इम्पल्स है वो गायब हो जाए, या फ्रीक्वेंट जो सब्सिक्वेंट आना चाहिए वहां पे बीट लॉस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बीट लॉस. Now you can see some MCQs that is asked in some PG NEET and screening of foreign regulation. You can found that now is the question: plateau phase of ventricular muscle is due to opening off. Now see the question: sodium channel, potassium channel, calcium sodium channel, and closure of potassium channel. Similarly, the one that is AC node acts as a pacemaker of heart because of the fault. मैंने बताया था AC node pacemaker क्यों कहलाता है. These are the options: is capable of generating impulses spontaneously, has rich sympathetic innervations, has poor cholinergic innervation, or generates impulses at the highest stage. So what is the answer? Now see, you will see that जैसे मैंने बताया था, द प्लेट्यू फेज की रीजन क्या है, दैट इज ड्यू टू द फनी चैनल. दैट फनी चैनल इज हियर इन द पेसमेकर पोटेंशियल एंड सिमिलरली इन फास्ट पोटेंशियल. फास्ट पोटेंशियल इसको हम फनी चैनल नहीं बोलेंगे, बट वैसा ही चैनल है, सिंपली कैल्शियम
यहाँ पे हम कैल्शियम सोडियम चैनल, यहाँ पे ये प्लेट्यू फेज कॉज कर रहा है, वहां पे कैल्शियम सोडियम जो है क्या करता है, प्री पोटेंशियल कॉज करता है. सो हियर द प्लेट्यू फेज, द आंसर इज कैल्शियम सोडियम चैनल. देन एससी नोड, व्हाई इट इज कॉल्ड पेसमेकर. अगेन द रीजन, जितने भी हमारे नोडल टिश्यूज हैं उस नोडल टिश्यू में इस रेट पे discharge, and that is called here pacemaker. So the cause is it generates impulses at the highest rate. The other question, least conduction velocity. Very simple question. You can see the least conduction velocity, AB node, Purkinje fiber, bundle of phase, or ventricular myocardial fibers. Then what is AB nodal delay? Question is here, what is the value? Again, least conduction is in AV node, as I said, highest in Purkinje fiber. Okay, AV nodal delay is here written 0.01. That may be in some case 0.013, 0.015, but you remember minimum on 0.01. Then cause of first heart sound. Very easy question for the students. AV closure valve, closure of aortic pulmonary valve, opening of valve, and opening of aortic and pulmonary valve. And the one question is somehow tricky. Vagal stimulation of the heart causes increased heart rate, increased RR interval, and increased force of part of contraction. इसका क्या आंसर होगा? ये तो पहला वाला तो बहुत सिंपल है. First heart sound is due to AV valve closure. Now here vagal stimulation क्या कर रहा था? Vagal stimulation is causing decrease in heart rate. Decrease in heart rate यहाँ ऑप्शन में नहीं है. Actually the option is here increase heart rate and increased RR interval. अभी आप जब पढ़े होंगे इसीलिए ये मालूम चल जाए कि हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं RR इंटरवल के थ्रू. RR इंटरवल ज्यादा होगा तो हार्ट रेट कम इसीलिए. Okay, students. Then coming to the very important and the next topic, that is the electrocardiogram. Before going in the detail, there are some terms you not confuse. Like what is electrocardiogram? Sometimes you will find ECG and sometimes EKG. Both are written for this electrocardiogram of the electrical activity associated with heartbeat. It is clear? We are talking about electrical activity of heartbeat, and that is recorded on a paper, or you can say that can be shown on the screen, that can be graphic representation. You can see here one machine, portable machine is there, that is portable electrocardiograph. Don't confuse here, the two terms are here. One is called electrocardiogram and one is called electrocardiograph. Okay, so graph is not the graph paper, graph is actually the instrument. यहाँ पे confuse नहीं करना है. electrocardiograph हमारी रिकॉर्डिंग नहीं है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं. ये अपोजिट नहीं करना. अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को रिकॉर्डिंग कर देते हैं और इसको इंस्ट्रूमेंट कर देते हैं. सो रिमेंबर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्डिंग ऑफ measure of electrical activity and electrocardiograph is instrument. Now normal ECG, but one question is asked about electric activity, and that is very nicely written in the most important book that you are reading is the Guyton. At UG level, most important book is the Guyton, and that explains the electrocardiogram
as per the because about the vectorial analysis of electrocardiogram. तो वेक्टोरियल एनालिसिस में हमें ईसीजी के सारे वेव्स डिस्क्राइब करने हैं, लेकिन हमें उसका प्रिंसिपल बताना है थ्रू वेक्टर प्रिंसिपल। और वेक्टर प्रिंसिपल के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हम जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डायपोल्स। तो यहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं कि हार्ट के अंदर जो ईसीजी या हार्ट के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है एक्चुअली हार्ट का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए डाइपोल। और डाइपोल में क्या होगा, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड। तो नेगेटिव पॉजिटिव साइड का मतलब ये है कि जो एक डाइपोल हमने बनाया है, ये इसको वेक्टर जो बना रहे हैं आप, या तो एक एरो बना सकते हैं वेक्टर डायग्राम, दिस इज अ वेक्टर डायग्राम, और you can show the dipole. So in that dipole, depolarized portion is considered as the negative one, and पॉजिटिव साइड ये है जो बाद में डिपोलराइज होगा। अभी डिपोलराइज तो उसको नहीं बोल सकते हैं, सपोज हो सकता है कि दोनों नेगेटिव पार्ट पे हो। तो जो डिपोलराइज पोर्शन है, मोर डिपोलराइज इज नेगेटिव एंड लेस डिपोलराइज, और जो बाद में डिपोलराइज होने वाला है उसको हम पॉजिटिव साइड बोले। दूसरा ये है कि हमारा रूल्स ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है। जो हम वेव्स बना रहे हैं, हमने देखा ईसीजी में कभी वेव ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है। तो ये रिकॉर्डिंग में ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन या डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन का क्या रीजन, ये जो वेक्टर का साइड है, यू कैन सी द वेक्टर नाउ दैट वेक्टर इज शोइंग नेगेटिव अपसाइड एंड पॉजिटिव दिस साइड। तो इसमें हम दिखाना ये होता है कि जो हम जब ग्राफ पे जो रिकॉर्डिंग आएगी और जो हमने इलेक्ट्रोड्स लगाया है, जो हम इलेक्ट्रोड्स अप्लाई कर सकते हैं ईसीजी रिकॉर्डिंग पे, जो हमने अभी आपको आगे बताएंगे कि लिम्स में हमने राइट लिम्ब में, लेफ्ट लिम्ब में, चेस्ट में हम जगह जगह इलेक्ट्रोड्स को लगा रहे हैं। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और जहाँ पे हमारा ये हमने सिग्नल प्रोवाइड किया, एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज मूविंग, व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, ओके, या तो इलेक्ट्रोड के तरफ जा रहा होगा या इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा होगा। दोनों कंडीशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं किस वेव में। जब ये इलेक्ट्रोड के साइड में टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स करंट जा रहा होगा, देन देयर विल बी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, एंड व्हेन द करंट इज गोइंग फ्रॉम डिस्टेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड और अपोजिट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, देन देयर विल बी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि जब इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करते हैं, एक्चुअली हम जब भी जो हम इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कि आगे लीड आएगा, तो लीड के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, और जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा होगा तो उसके वजह से आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, just you have to explain or memorize these things writing in the examination and to crack the MCQs if it is asked। ये चीज आपको याद करना है अच्छी तरह से। upward deflection is due to the vector moving towards positive electrode, downward deflection of ECG means movement of vector towards negative electrode, first thing, okay। then the second thing is that ये तो हो गया कि अपवर्ड डिफ्लेक्शन और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, सिंपली डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। बट द सेकेंड थिंग इज देयर कि हाउ मच अप हाउ मच डाउन, इट मीन्स ये जो हमने अपवर्ड डिफ्लेक्शन बनाया है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी, वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगेन एम्पलीट्यूड इज टेलिंग अबाउट द वोल्टेज, that means the strength of depolarized wave। और इसको हम शो कैसे करते हैं, ये जो एरो बनाएंगे वेक्टर एरो की हम दो चीज बना सकते हैं, लेंथ भी शो कर सकते हैं, विड्थ भी शो कर सकते हैं। ये इसकी लेंथ ज्यादा है इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग वेव है, लेंथ कम है इसका मतलब ये वीक वेव है। ओके, सो दैट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डिपोलराइजिंग एंड डिपोलराइजिंग वेव। Then the next thing, example you can see here, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे ऐसे नोड से ए बी नोड की तरफ सिग्नल जा रहा है,
and it is showing one arrow here. It is showing the depolarization. कि अभी यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स नहीं दिखा रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे हम एरो की बात कर रहे हैं। ये जो एरो की विड्थ है स्ट्रॉन्ग, आप यहाँ पे देख सकते हो ये थिन एरो है, यहाँ पे थिक एरो है। यहाँ पे डायरेक्शन हमारा ऐसे है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। आप क्लियरली कह सकते हो कि हमारा सिग्नल अपोजिट नेगेटिव डिफ्लेक्शन एंड द वोल्टेज इज वीकर देन द प्रीवियस वन। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्शन यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ भी। ये रिपोलराइजेशन में भी नेगेटिव ऐसा शो कर सकता है, बट वहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही वाइड है। यहाँ पे वाइड होने का रीजन क्या है? वाइड का मतलब है कि हमारा स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड आएगा, बट वाई इट इज वाइड? due to the more mass of muscles, stronger tissue होता है, इसलिए यहाँ पे जो एरो है बहुत ही थिक एरो दिखाया हुआ है, एंड डायरेक्शन इज अगेन इज टुवर्ड्स एपेक्स। ये जो डायरेक्शन से हमें डिटरमाइन करेंगे डिफ्लेक्शंस का, और ये विड्थ जो डिटरमाइन करेंगे कि हमारा कितना एम्पलीट्यूड हाई है वेव के लिए। Now going to the normal ECG. This is showing simply PQRST. The normal one usually have P, QRS and T wave. P wave means electrical depolarization, atrial depolarization, atria depolarize कर रहा है, उस वक्त ये P wave बनेगा. Positive deflection. QRS complex is there. It is called RS complex having three waves: negative deflection U wave, positive deflection that is a stronger R wave, and again negative that is S wave. ये अब पूरा का पूरा जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, बट द वेंट्रिकल इज लार्जर पार्ट। तो वेंट्रिकल्स के सारे पार्ट में आप देख सकते हो कि कांस्टेंट मूवमेंट नहीं है। यू कैन सी हियर दिस इज आल्सो शोइंग दिस इज आल्सो शोइंग सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये पहला था एट्रियल डिपोलराइजेशन पॉजिटिव वेव, सेकेंड थर्ड फोर ये तीनों वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है। QRS, second is Q, third is R wave and third is S wave. Second, third, fourth ये तीनों मिला के क्या बना रहा है? QRS complex। आप देख सकते हो कि R जो है typically very large and thick in and towards the apex, so that is the positive strong deflection, and these two that is the Q and S ये आपको छोटे छोटे वेव्स हैं यानी कि वीक हैं, एंड दैट इज द अपोजिट वन यानी कि ये दोनों नेगेटिव डिफ्लेक्शंस है। जो आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव डिफ्लेक्शंस एंड वीक डिफ्लेक्शन इज द QS एंड R इज द स्ट्रॉन्ग। देन T wave is due to the ventricular repolarization wave that is again having the positive deflection. Then there are two terms, one is called electrodes and leads. ये भी आपको practical part में, practical portion में you can do the practicals. You will see these things in your labs. What are the various electrodes? You will find usually this type of things. इसके अलावा दूसरे भी डिजाइन्स होते हैं, लेकिन कॉमनली हम इस तरह के इलेक्ट्रोड्स लैब में देखते हैं। जो आपको ये प्लग टाइप दिखते हैं, दैट इज द फ्लैट मेटल प्लेट्स। इसमें ही अंदर की तरफ मेटल प्लेट्स अटैच होते हैं, दैट आर फॉर अप्लाइंग ऑन द लिम्स। लिम्स के लिए जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर द लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, आर ऑफ 4 कलर्स। एंड देन चेस्ट इलेक्ट्रोड्स ये कप शेप के सक्शन कप्स की तरह होते हैं, दैट आर द मेटल कप एंड दैट आर कॉल्ड चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। ये दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके, दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर ECG. Now color, you can see the color here: green, yellow, black, red. Okay, that is specified, you cannot change. Most of the times there is written also, आप जो आप इलेक्ट्रोड उठाओगे उस पे लिखा भी होगा कि राइट आर्म के लिए है, रेड कलर भी है उसका, and you can find written right arm, and it
it is fixed for right arm. Yellow color is for left arm. Okay, you may find the term LA on the lead itself. आपको मिल जाएगा electrodes पे लिखा हुआ. And green is for left foot. Okay, and N for black. जो आपको कहाँ लगाना है? राइट फुट. राइट फुट में हम लगाते हैं. दैट इज कंसिडर्ड एज द इंडेफिनिट इलेक्ट्रोड, जीरो पोटेंशियल. एंड चेस्ट इलेक्ट्रोड जितने हैं या तो सारे ब्लू कलर के हो सकते हैं, या इसमें भी हो सकता है कि जितने 6 इलेक्ट्रोड्स ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं. एंड समटाइम्स यू फाइंड दैट देयर आर फ्लैट व्हाइट कलर इलेक्ट्रोड्स आल्सो. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स possible, but you should remember this nomenclature for attempting the questions. Lead. What is lead? Lead is the combination of electrodes. Electrode is simply one single one that you are applying, the metal one that is passing the current. But when you combine two electrodes, okay, then it makes lead. Lead is a pair of electrodes जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट करते हैं. दो इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया रीडिंग के लिए. मशीन से ऑटोमेटिक सेटिंग होती है. मशीन विल रिकॉर्ड, मशीन विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई इट हैव टू टेक वन लीड. वन या तो 0 पे होगा, अगर यूनिलिंब के लिए है. अगर यूनिपोलर है तो एक 0 पे होगा. ठीक है. बाईपोलर है तो दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स के साइड्स पे होंगे. या चेस्ट लीड्स, अगेन दैट इज अ टाइप ऑफ यूनिपोलर लीड्स. तो हम जो यूजुअल ईसीजी करते हैं, दैट ईसीजी इज कॉल्ड 12 लीड ईसीजी. नॉर्मल ईसीजी डन nowadays are 12 lead ECG that is having 6 limb leads and 6 precordial or chest leads. Okay, एंड ये 12 इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन क्या है? 12 इलेक्ट्रोड्स का मतलब सिर्फ ये है कि हम हार्ट को, क्योंकि हार्ट हमारा बॉडी के अंदर है और हमें हार्ट के अंदर की पैथोलॉजी को, अंदर की चीजों को समझना है इलेक्ट्रोड के थ्रू. तो इट इज लाइक ए कैमरा. यू आर अप्लाइंग वन कैमरा फ्रॉम फ्रंट, वन कैमरा फ्रॉम साइड, वन कैमरा फ्रॉम द लोअर साइड, आउटर साइड. हर तरह से हमें कैमरा की तरह एक ऐसा अप्लाई करना है. इस तरह से हमें हर एंगल से इसका पिक्चर लेना है. इसकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो एक्टिविटी है उसे रिकॉर्ड करना है. दैट इज थ्रू दिस combination of different type of electrodes. Okay, there are 3 bipolar limbs and 9 unipolar limbs. In 9 unipolar limbs, 3 are considered as augmented limb leads and 6 are the chest leads. ये सब आपको continuously you can do on the lab. You can do the practicals. अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? नाउ यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ चेस्ट लीड्स. जो हमने बताया कि चेस्ट लीड्स 6 अप्लाई करने होते हैं. ठीक है, जिसको हम प्रीकॉर्डियल लीड्स बोल रहे हैं. नाउ फॉर दिस यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर द साइट्स. ये साइट्स आपको अच्छी तरह से याद करना है कि V1 और V2 हमें कहाँ अप्लाई करना है. फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, स्टर्नम के राइट साइड में होगा तो V1 है, यानी कि लीड 1 प्रीकॉर्डियल. लेफ्ट साइड में होगा तो V2 होगा. कहाँ पे है ये? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे. ओके, देन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें V4 को अप्लाई करना है. अब नाउ V4, V5 और V6, ये तीनों जो चेस्ट लीड्स हैं ये तीनों हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में. ये V1, V2 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, 4, 5, 6 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में. ओके, V3 is between V2 and V4, but try to apply it near to the tissue, not at the bone. Okay, V4, V5, V6 all are in the fifth intercostal space, but at different lines. Different lines means different vertical lines. एक तो mid V4 is applied at the mid clavicular line, V5 is at anterior axillary line and V6 is mid axillary line. ये एक्सिला के बहुत पास है, ये एक्सिला थोड़ा दूर है और ये क्लेविकुलर. ये हमारे 6 पोजीशंस होते हैं चेस्ट लीड्स के. यू हैव टू रिमेंबर दिस पोजीशंस फॉर MCQ as well as your examination. Then most important part is how will you form
polar limits. Bipolar हमें लगाने होते हैं electrodes. One electrodes at this right limb, one electrode at the left arm, and one electrode at left leg. और इसके different combination से हम bipolar limblets बनाते हैं. Okay, lead 1, lead 2, lead 3. You can remember where is the negative terminal, where is the positive terminal. And very important thing is there that I am not going in detail, but the value written here plus 1.2 here. Okay, here plus 0.7. ये वैल्यू भी आपको याद करना है. ठीक है कि लीड 2 की वैल्यू कितनी होती है डिफरेंस की, और लीड 3 में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है. ये वैल्यू भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 1 प्लस 1.2 है, यहाँ पे प्लस 1.7. वैल्यू आपको याद रखना. सबसे पहले याद करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल सबके लिए, यहाँ स्पेशली 2 एंड 3 के लिए पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारा क्या है, लेफ्ट लेग है. 2 and 3, you can see here 2 and 3 positive terminal is left leg and negative terminal हमारा different. ठीक है, right है तो लीड 2 बनाएगा, लेफ्ट आर्म है तो लीड 3 बनाएगा. लीड 2 लीड 3 के लिए हो गया. लीड 1 कैसे बनेगा? लीड 1 इज सिंपली फाउंड बाय अप्लाइंग दिस 2 लीड्स ऑन द बोथ द आर्म्स. राइट पे नेगेटिव टर्मिनल और लेफ्ट पे पॉजिटिव टर्मिनल. ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन बना के, पिक्चर प्रैक्टिस करके और प्रैक्टिकल लैब में करने के बाद यू हैव टू practice this picture very clearly. You have to make this triangle and you have to make lead 1, lead 2, lead 3 किस किस टर्मिनल से बनता है. Then because of this lead 1, lead 2, lead 3, very important question is asked based on this. That is called, इसको बोलेंगे हम इन्थोवेंस ट्राइंगल. अक्सर जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ईसीजी में, उसमें ये क्वेश्चन दिया जाता है कि इन्थोवेंस ट्राइंगल क्या है, इन्थोवेंस लॉ क्या है. उसके बाद आप नॉर्मल ईसीजी बताइए और फिर उसमें कुछ पार्ट्स एडेड होते हैं कि ईसीजी के आप वेव्स डिस्क्राइब करिए या ईसीजी का अप्लाइड पार्ट डिस्क्राइब करिए या ईसीजी की वेक्टोरियल एनालिसिस करिए. बट मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ इन्थोवेंस ट्राइंगल. Enthoven's triangle is very simple thing that we have considered one triangle situated in the chest having the heart in its center. हमने एक ट्रायंगल को मान लिया है. We have considered, assumed there is one triangle that is जो हम अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, उसको मान के चलने के ये सारे इलेक्ट्रोड्स हमारे इस ट्रायंगल्स को ही मेजर करते हैं. We are applying the electrodes at surface in the right limbs, in the left limb, but actually we are considering that this is having or measuring the value of this triangle. The triangle that is having right and left apex on the right and left arm, and this apex is on the left foot. ये हमारे triangle का apical side तीनों apex है, and heart is lying on the center. Okay, you will write this negative negative पॉजिटिव नेगेटिव जो इसका वे है उसी तरह से हमें बनाना है. और यहाँ पे हम लीड 1, लीड 2, लीड 3 आप लिख सकते हो. कहाँ पे हमारा लीड 1, लीड 2, 3 इस पिक्चर, बट यू कैन वेरी क्लियर एंड 3 जो यहाँ पिक्चर में आपको सो रहा है, आप यहाँ पे 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं इन द सेम पिक्चर. देन सेकेंड पार्ट इज इन्थोवेंस लॉ. What is Inthoven's law? क्या है Inthoven's law? Inthoven's law is telling that when you will add the value of lead 1 to lead 3, then you will find the value of lead 2. It means sum of the potentials in lead 2 and lead 3 is equal to the potential in lead 2. Lead 1 is equal to lead 1 plus lead 3 is equal to lead 2, and it is proved here. You will find the calculation in every book. You will try to add that voltage present in the lead 1, then voltage present in the lead 3, and you will finally find this value VF minus
VR, and that VF minus VR means this is lead 2. तो ये कैसे 1 और 3 को ऐड करके lead 2 आता है? That is simply Einthoven's law. तो ये आपको Einthoven's triangle प्रैक्टिस करनी है, एक्सप्लेन करना है, और Einthoven's law को भी हमें explain करना है through this picture. This picture and this slide is very important part of the then second way, this is the second way. आप इस तरह से भी बना सकते हो. ये जो पिक्चर दिख रहा है कि सिंपली आप एक हार्ट बनाइए, चेस्ट केज हो या ना हो, लेकिन इन दैट यू कैन ड्रॉ ओनली दिस limbs. This is one. You can write right arm, left arm and right leg. अगर पिक्चर नहीं बना सकते हो, then you can write this right arm, left arm and left leg or left foot, and you will write this lead 1 in the upper line and lead 2 here and lead 3 here. These are the apex of the part of this. It is called Einthoven's triangle. The second thing is that this Einthoven's triangle is having equilateral triangle. Equilateral triangle angle मतलब ये हुआ कि सारे angles ये 60 डिग्री के हैं. ओके, एंड अब इसी ट्राइंगल पे हम बाकी जितने भी हमारे लीड्स हैं, जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड चेस्ट लीड्स में अगर हम साथ में ऐड कर दें तो ये बन जाता है हमारा हेक्साहेक्सल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. यहाँ पे अभी 3 वेक्टर्स थे हमारे, अब इसके साथ 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 हम 3 वेक्टर्स और ऐड कर रहे हैं. दैट इज फॉर ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स. दैट इज सिंपली द परपेंडिकुलर ऑन दिस 3 एजेस. जितने भी हैं सारे एपेक्स हम एक एक परपेंडिकुलर डालेंगे and you will make these 3 more dotted lines that are representing the augmented limb leads, and you can draw the angles of all these 6 leads. 3 आपके bipolar limb leads and 3 unipolar augmented limb leads के angles हमारे क्या क्या होते हैं. आप उसको ये सारे angles में शो कर सकते हैं कि हमारा वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर का एंगल कितना. जैसे कि लीड 2 का कितना होता है, लीड 2 इज 60 डिग्री. यहाँ पे हमने 0 माना है. लीड 2 इज हैविंग 60 डिग्री, यहाँ पे यह है 60 डिग्री. ठीक है, इस तरह से सारे के सारे एक्सिस को हमने एक ही ड्रॉप किया है. दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेक्साहेक्सियल सिस्टम. समटाइम्स दिस हेक्साहेक्सियल सिस्टम इज आल्सो आस्क्ड, एंड यू फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर द एंगल्स कि हमारे किस का कितना एंगल होता है. तीनों लिम्ब लीड्स के और तीनों ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स के. देन यू कैन रिमेंबर दिस बट इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल्स कि किस किस लीड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लैटरल लीड्स में, इंटीरियर लीड्स में, inferior leads में. That is very important for the applied aspect when you are seeing the ECG for the myocardial. And other things sequence you can remember this, and these are the corresponding names for this type of leads. Okay, then moving to the normal ECG. Okay, this is the normal ECG. When the question is asked about the normal ECG, we have discussed about the principle vector analysis. कैसे हम vectors इसको explain करेंगे, कैसे इसका positive deflection or negative deflection size of the wave को explain करेंगे. Then in normal ECG you have to describe what are the various waves like the P, Q, RS complex and T. जो हमने पहले बता दिया कि P wave is due to the atrial depolarization. QRS complex is due to the ventricular depolarization. T wave is due to the ventricular repolarization. These are the normal waves जो आपको P, QRS complex and T, ये इतना आपको सारे बच्चों को याद होता है. हमने जितनों को वाइवा लिया है, most of the students, I suppose all students know this P, QRS, T, and these are due to the various depolarization and depolarization. ये 6 चीजें, लेकिन इतने से काम नहीं चले. When you are explaining the question, you are writing the question, as per MBBS graduates, you have to know much more. When the normal ECG
is asked, you have to explain and write more. Now you have to tell about the width of wave and the height of wave. Width का मतलब ये है कि हमारा ड्यूरेशन क्या है, और एम्पलीट्यूड यानी कि वोल्टेज या हाइट क्या है. हमें हर वेव के बारे में ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा जो है क्या ड्यूरेशन होता है, और कौन सा वेव कितना वाइड है, कौन सा थिन है, कौन सा टॉल है, कौन सा स्मॉल है. ये आपको प्रॉपर पिक्चर बनाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दीज थिंग्स आल्सो. ओके. Beside that, there is a small U wave sometimes. That is a normal finding. So you can write besides PQRST, you can write U wave also. A small U wave, you can compare the T and U. U is smaller, and that is around 0.04 second, and amplitude is also very less. And that is due to the repolarization of papillary muscles. That is not recorded in all ECGs, but it may be recorded in subpapillary muscle is stronger and properly वहां तक signal पहुंच जाता है electrode का, then you can record this U wave. These are only showing normal waves. इसमें कोई अभी abnormal wave नहीं है. But besides that, जब आपसे नॉर्मल ईसीजी एक्सप्लेन करने को दिया जाए तो सिर्फ वेव्स आपको एक्सप्लेन नहीं करने हैं, वेव्स के सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, बट देयर आर सम मोर थिंग्स देयर दैट आर कॉल्ड सेगमेंट एंड इंटरवल्स. यू मस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन various segment and various interval. We are not going in the details of this. These are the things that you have to remember कि कहाँ से कहाँ तक हमारा क्या सेगमेंट है और कौन कौन से इंटरवल है. आप इस पिक्चर को बहुत अच्छे से तैयार करिए, पूरे नोमेनक्लेचर के साथ आपको करना है कौन से पार्ट पे इंटरवल कहलाता है. देयर आर सम इंटरवल्स लाइक PR इंटरवल्स, ST इंटरवल्स, QT इंटरवल, RR इंटरवल. इंटरवल्स ज्यादा है. यू कैन सी दैट देयर इज अ PR इंटरवल, और उसके बाद हमारा आएगा QRS इंटरवल, फिर उसके बाद ST इंटरवल, एंड QT इंटरवल इज हैविंग टू पार्ट्स, QRS एंड ST. ये सारे इंटरवल्स. और फिर RR इंटरवल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. RR इंटरवल इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द हार्ट रेट. ओके. देन one more thing can be asked in ECG sometimes, that is what is mean electrical axis. तो ये हमारे हमने लीड्स बनाए हैं, उन सारे लीड्स को कंबाइन कर दिया जाए सारे डायरेक्शंस को, तो एक जितने हमने हेक्सा एक्सियल सिस्टम में एंगल्स बताए थे, ये हमारा ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, तो इन सब का मीन निकाला जाए तो एक निकल के आएगा सारे कितना एंगल है, उसको हम बोलते हैं मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस. एंड द नॉर्मल रेंज इज -15 टू +110. ये वैल्यू आपको याद रखना है. -15 टू +110 इज द normal value of mean electrical axis. And if it is less than -15, then it will be called left axis deviation. And if it is more than 110, then it would be called लेफ्ट में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हाइपोट्रॉफी होगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा. राइट हाइपोट्रॉफी होगी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो राइट एक्सिस डेविएशन होगा. ओके. Then there is one more thing. How will you calculate this? That is again the part of the lab. But if the question is asked about mean electrical axis, you can write this. That it is calculated by reading in 1 and 3. इस दोनों में QRS कॉम्प्लेक्स की रीडिंग से लीड 1 में और लीड 3 में QRS कॉम्प्लेक्स की रीडिंग्स को हम दोनों को अलग अलग ड्रॉ करते हैं उसके अपने अपने एंगल लाइन पे, जो जिसका उसका डायरेक्शन वेक्टर लाइन है. उसका हमारे लीड 1 का वेक्टर लाइन ड्रॉ किया हमने 0 डिग्री, लीड 3 का वेक्टर लाइन ड्रॉ किया
120 डिग्री, और फिर उस दोनों पे हमने एक मीन लाइन ड्रॉ किया, दोनों के परपेंडिकुलर पे वो एपेक्स से मिला देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मीन, दैट इज QRS complex, and that is the mean electrical axis of QRS. Then coming to the abnormal ECG. Abnormal ECG में usually हमारे 4 parts है, but when you are reading abnormal ECG, you have to divide in 4 parts. पहला तो यह है कि सिंपली हमारे रेट और रिदम से रिलेटेड है। दूसरा यह है कि हमारे कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और उसके बाद मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होगा। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट है कि अगर आयनिक डिसऑर्डर्स में किस तरह के ECG एबनॉर्मलिटी होती है। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट। एंड one basic question is that when the heart rate is increased or decreased. Heart rate जब ज्यादा होता है, usually more than 100, it is called tachycardia. तो ये आपको टर्म मालूम है, tachycardia ज्यादा होने को बोलते हैं, और bradycardia is the slow heart rate. Usually it is when it is less than 60. तो ये tachycardia सकते हो, but it can also be drawn by seeing the ECG. आप देख सकते हो कि नॉर्मल ECG, अब ये आपका एबनॉर्मल ECG, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेव्स कितने एक दूसरे के क्लोज हैं। यू कैन काउंट बाय द रूल, जो आपका रूल होता है, RR इंटरवल के बीच में कितने स्मॉल बॉक्सेज हैं, एंड दैट विल बी डिवाइडिंग 1500 divided by number of will create a हार्ट रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज वेरी मच हायर हार्ट रेट, और यहाँ पे बहुत ही स्लो है, ऐसे भी दिख रहा है क्लियरली, आप देख सकते हो कि ये स्लो आता है। हमारे बहुत सारे बॉक्सेज में कोई भी वेव नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया एंड ट्रैकिकार्डिया। देन दूसरा डिसऑर्डर है जो रिदम से रिलेटेड, 3 चीजें बनती हैं। एक तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा एट्रिया से रिलेटेड एरिथमिया हो रहा है, एट्रियल एरिथमिया या वेंट्रिकुलर एरिथमिया, एंड द थर्ड थिंग इज सिंपली हार्ट ब्लॉक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट abnormal ECG in UG level at your level is heart block, that sometimes asked in professional examination also कि हार्ट ब्लॉक क्या है। तो block के various types होते हैं, you can see here there are 4 types of heart block: sinoatrial heart block, then incomplete block, and the complete block. That depends how much signal from SA node is missing. SA node से जो signals बनते हैं, और most of the time हमारा जो सिंपली पी वेव से काउंटर का ये डिसाइड करेगा कि किस तरह का हार्ट ब्लॉक है। ओके, सिंपली पी वेव अगर आना बंद हो गया है तो उसको बोलते हैं हम साइनो एट्रियल ए ब्लॉक। पी वेव का मतलब है एट्रियल डिपोलराइजेशन, यानी एट्रिया से रिलेटेड है। पी वेव नहीं आ रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव आ रहा है, यानी कि एट्रिया के वेव्स नहीं आ रहे हैं, वेंट्रिकुलर के वेव्स आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे साइनो ब्लॉक। ठीक है, नोट से नहीं आ रहा है, रिदम एक्चुअली हमारा न्यू रिदम है, वेंट्रिकुलर रिदम पे हार्ट बीट करता है इन केस ऑफ दिस साइनोएट्रियल ब्लॉक। इन द सेकेंड टाइप इज इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक को डिफरेंट टाइप्स में बताया गया है, फर्स्ट डिग्री, second degree, and then second degree is incomplete and third degree is complete heart block. तो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में क्या होता है, इसमें हम जो PR इंटरवल है दैट इज द सिग्निफिकेंट थिंग कि PR इंटरवल क्या है, और कोई वेव बीच बीच में गायब हो जाएगा। ठीक है, कोई वेव, यानी कि हो सकता है कि 2 वेव नॉर्मल है, तीसरा वेव गायब हो जाए, 3 वेव नॉर्मल है, उसके बाद चौथा वेव गायब, एक कांस्टेंट रेट के
बाद वेव्स हमारे यानी कि हमारा सिग्नल मिस हो रहा हो या सिंपली हमारा पी आर इंटरवल इंक्रीज कर गया हो। तो यहाँ पे कोई वेव्स गायब नहीं हो रहा है, बल्कि पी आर इंटरवल जो है ये इंक्रीज कर गया है सिंपली, और हार्ट जो है स्लो बीट कर रहा है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स भी कम मिलेंगे, और साथ में क्या होगा कि पी आर इंटरवल सिर्फ इंक्रीज कर जाएगा ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड। इस तरह के हार्ट ब्लॉक को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलेंगे। ये माइल्ड प्रॉब्लम है, नॉट सीवियर, सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री एंड इट इज हैविंग ओनली इंक्रीज इन पी आर इंटरवल। दूसरा टाइप ये होगा जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बीच बीच में बीट्स गायब हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपली ड्रॉप्ड बीट्स। ड्रॉप्ड बीट यानी कि एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव इस तरह से आ रहा है और फिर एक वेव गायब हो गया, उस चीज को हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड वेंकी बैच फिनोमेन। ठीक है, क्या हो रहा है अब आपको दिखेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि पहला वेव सही है, दूसरा वेव सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, और फिर एक गायब हो गया। ये डिपेंड करता है ये किस रेशियो में गायब हो रहा है। तो इसमें 2:1 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 4:1 हो सकता है। यूजुअली उसको हम 2:1, 3:1 ज्यादा मिलता है, उसको बोलते हैं कि मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2। इसमें सिंपली आपको याद ये रखना है कि सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का मतलब ये है कि हमारा बीट जो है बीच बीच में गायब होता है, ड्रॉप बीट्स। फर्स्ट डिग्री में कोई बीट ड्रॉप नहीं हो रहा है, सिंपली पी आर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी पी आर इंटरवल इंक्रीज होगा, लेकिन साथ साथ बीट भी गायब हो जाएगा। थर्ड डिग्री में क्या है, थर्ड डिग्री इज कंप्लीट एवी ब्लॉक इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ ड्रॉप्ड बिट इज मोर एंड एपिएट बिट इज लेस, जस्ट अपोजिट हो रहा है, वेरी पुअर कंडक्शन, बहुत ही कम इसमें आपको वेव्स मिलेंगे। यानी कि हमने सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में फर्क क्या है कि सेकेंड डिग्री में भी बीट जो है बीट्स गायब हो रहे हैं, थर्ड डिग्री में भी बीट्स गायब हो रहे हैं, सिंपल वे में समझने में। लेकिन सेकेंड डिग्री में जो बीट्स आ रहे हैं वो ज्यादा हैं और गायब होने वाले कम हैं। ठीक है, थर्ड डिग्री में क्या है, आने वाला बीट्स बहुत ही कम है और ज्यादा बीट्स हमारे लॉस हो रहे हैं, नंबर ऑफ बीट्स मैक्सिमम लॉस्ट है। इसको हम कंप्लीट एवी ब्लॉक या थर्ड डिग्री ब्लॉक बोलेंगे। देन एट्रियल एरिथमियाज आर देयर। एट्रियल एरिथमियाज यानी कि एट्रिया की जब कंडक्शन रेट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक में क्या हुआ, हार्ट रेट कम हो रहा है। अब हार्ट रेट हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, हार्ट रेट जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम एरिथमियाज बोलेंगे। ठीक है, अब हार्ट रेट एरिथमिया क्यों बोल रहे हैं कि इसमें हार्ट रेट ज्यादा भी है और साथ में रिदम डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। सिंपली थोड़ा सा रेट बढ़ रहा था, कोई रिदम में डिस्टर्बेंस नहीं था, उसको हमने टेकिकार्डिया बोला। नाउ इट इज एरिथमिया, और you can say combined tachyarrhythmias also. It is atrial tachyarrhythmia and there another will atrial tachyarrhythmia है। इसमें हम एक तो सिंपल हो गया कि टैकीकार्डिया कर रहे हैं, तो ये रेट्स के हिसाब से डिफाइन है, उसके अलावा दूसरे प्रॉपर्टीज भी हैं, बट आपके लेवल पे वेरी सिंपल वेरी इजी यही है कि आप रेट्स के हिसाब से आपको याद करना है। 200 तक जब रेट होगा तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलेंगे, 200 से लेके 350 तक को हम सिंपली एट्रियल फ्लटर बोलेंगे, एंड मोर देन 350 इज एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आपको ये तीनों टर्म याद करना है, टैकीकार्डिया, फ्लटर, फिब्रिलेशन, एंड डिपेंडिंग ऑन द रेट सिंपली। बाकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर रेट ज्यादा है तो 200 से 350 यानी कि फ्लटर कम इस तरह का पैटर्न मिलता है, तो उसको बोलते हैं सॉ टूथ पैटर्न। ओके, एंड दिस इज द क्लियर कट फिब्रिलेशन, बहुत ही छोटे 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 वेव्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको फिब्रिलेशन बोलेंगे। सॉ टूथ इज फाउंड इन एट्रियल फ्लटर। ओके, सिमिलरली if there is problem in ventricular rhythm, ventricular waves में प्रॉब्लम, that is a very serious type of problem। जब इस तरह की चीजें होती हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो ये सीरियस ही होता है। ये इसमें क्या होता है, ये कुछ स्पेशल बीट्स जो है बीच बीच में आते हैं, और इसमें रिदमिया के साथ साथ जो इसमें रेट ज्यादा होंगे उसके लिए टर्म यूज होता है हेयर पिन कर्व। जब यहाँ पे
जो fibrillation होगा, that ventricular fibrillation is called hairpin curves. तो ये आपको यहाँ पे ये जो curves मिल रहे हैं, that is the hairpin curves. You can see here, and that is not easy to recognize, but in case of पैरोक्सिस्मल टैकिकार्डिया इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या मिलेगा, ये कुछ नॉर्मल पैटर्न मिलेंगे, कुछ छोटे मिलेंगे, यानी कि दोनों तरह के नॉर्मल बीट्स, बीच बीच में इंटरस्पर्स नॉर्मल बीट मिलेंगे, तो उस चीज को हम वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बोलते हैं। प्रीमैच्योर बीट्स मिलते हैं और कुछ नॉर्मल बीट्स मिलते हैं। ओके, देन दिस इज वन इम्पोर्टेंट पोर्शन दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इन्फार्क्टेड टिश्यू है ये कितना पुराना हो गया है, रिसेंट अटैक है या ज्यादा पुराना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये इस तरह से ट्रेसिंग है, वेव 1 से लेके ये सारे के सारे हमारे लीड्स दिखाए जा रहे हैं। लीड 1 की रिकॉर्डिंग है, लीड 2 की रिकॉर्डिंग है, 3 की रिकॉर्डिंग है, सारे लीड्स की रिकॉर्डिंग है। द ए इज द नॉर्मल वन, ए इज शोइंग नॉर्मल वेव्स, और ये बी सी डी ई दीज आर showing the different stages of infarction. Now इसमें आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आप अगर न्यू वन है तो हम यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे टी वेव में देखते हैं ये पोर्शन, यहाँ पे क्या दिखता है, एसटी सेगमेंट हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इलेवेटेड हो गया, दिस इज कॉल्ड एसटी इलिवेशन, दिस इज द न्यू पैटर्न। जैसे ही नया कोई टिश्यू होगा इसमें आपको एसटी एलिवेशन मिलेगा, 1 में मिल सकता है, एवीएल में मिल सकता है, चेस्ट प्लेट्स में मिलेंगे। ठीक है, यू कैन फाइंड, यहाँ भी जितने भी दिख रहे हैं ये सारे हमारे कहलाएंगे एसटी इलिवेशन। ये एसटी इलिवेशन है 1 में, यहाँ एसटी इलिवेशन है एवीएल में, यहाँ एसटी इलिवेशन है चेस्ट प्लेट्स में। ओके, और ज्यादा जब पुराना हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओल्डर वन, तो उसको कहते हैं कि वहां पे पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यूजुअली क्यू वेव क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, या तो छोटा होता है या किसी किसी में हम जहाँ पे क्यू वेव छोटे हैं उसको उठाते हैं, जैसे कि पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट में और सेकेंड में यूजुअली क्यू वेव छोटे होते हैं। तो क्यू वेव अगर फर्स्ट लीड में बहुत ज्यादा बड़ा एपियर हो जाएगा, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स, दैट इज फाउंड इन द लेटर केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, देन टी वेव भी मिलेंगे, और टी वेव हो सकता है कि नॉर्मलाइज हो गया और सिर्फ क्यू वेव मिलेगी। यानी कि हमें 3 चीजें इसमें यूजुअली याद करनी है आपके लेवल पे। सबसे पहले एसटी सेगमेंट एलिवेशन, then appearance of Q wave, and the third thing is that in the last or the late case, ST segment elevation will be normalized and Q waves will be present as pathological. तो पहले क्या है, सिर्फ ST segment elevation है, दूसरे में क्या है, ST segment elevation के साथ Q waves है, और सबसे ज्यादा जो लेट होगा उसमें सिर्फ पैथोलॉजिकल की वेव्स होंगे। ये आपके लिए बेसिक फाइंडिंग्स है फॉर यूजी लेवल। देन द फाइंडिंग्स इन पोटेशियम डिसऑर्डर्स, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया समटाइम्स asked. Here the special question, that is the sine wave pattern is found in hyperkalemia and the peak T wave. This is showing the peak T wave and sine wave pattern. This is for hyperkalemia. यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स और ये T wave, ये दोनों फीचर्स जो अलग हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो गया है T wave, और QRS कॉम्प्लेक्स में ऐसे साइन वेव पैटर्न है, एम शेप है, एम shape QRS complex, and in case of hypokalemia U wave is prominent. U wave जो यूजुअली नहीं अपीयर होना चाहिए या बहुत ही छोटा होता है, ये ज्यादा हो जाएगा। एंड देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग is T wave is inverted. T wave is inverted. These two are the features of hypokalemia. Then coming to the last part of today's
some MCQ questions. So, what is influence law? क्या होता है? इसमें से क्या आंसर होगा इसका? दूसरा क्वेश्चन जैसे QRS complex, you can see it is asked in various examination. QRS complex indicates. Now you can see the answer. Law, lead 1 plus lead 3, and QRS complex indicates about ventricular depolarization. Atrial depolarization किससे होगा? P wave. Ventricular depolarization is QRS complex. Okay. Then now you can see one more question that is about mean electrical axis. A male long-term smoker who is 62 years old. Yes, following EKG में पिक्चर नहीं दिया है, इसके साथ EKG के पिक्चर्स भी आपको हो सकते हैं, ग्राफ भी मिल सकता है, but it is clearly asking about the normal mean electrical axis, and we have supposed to ask the normal mean electrical axis, and that is कौन सा इसमें आंसर हो सकता है? नॉर्मल एज -15 टू +115, ये नॉर्मल रेंज होता है. तो हमें यहाँ पे -15 और +115 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज 105 डिग्री. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. Thanks, Dr. Gohar. There are students who joined and then they left. So it's happening in our all Sunday classes and all. We have already recorded it, and it is there for future records and all, and you can share it among your students of your college into the university. We would be sharing it to the other colleges students who have registered with us with the link and all. So this is all about today's lecture on physiology. The interesting point is that you have brought very good MCQs and explanation of that. So it would really help the first year students to write their next examination when they will write it in 2027 and 28. So very nice presentation. There is a little problem in internet, so sometimes it become very slow and all. So I think you have covered half of the cardiovascular system. Next week we will cover the rest. Okay, thank you, Pranul. Thanks, Dr. Gohar, for sparing your precious time and giving your weekend to us. Thank you. Thank you again. Okay. Thanks a lot. I'm just disconnecting and reconnecting. Okay, thank you. Should I leave? Yes, yes.